ओके, सो कंसिडर लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिसीजन ट्री कंप्लीट किया था. सो नाउ कंसिडर आई हैव 150 एलिमेंट्स और 150 रिकॉर्ड्स आई हैव. ओके, और मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, टेस्ट पार्ट एंड ट्रेन पार्ट. ओके, सो पहले ट्रेन पार्ट ले लेते हैं. सो ट्रेन पार्ट में हमारे पास 105 एलिमेंट्स थे एंड टेस्टिंग पार्ट में हमारे पास 45 एलिमेंट्स थे. सो अगर मैं अपने अपने एक्चुअली लाइक रिकॉर्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड करूँ, 70% एंड 30%. 70% इन द सेंस 105 एलिमेंट्स. तो इस 105 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, अदरवाइज उन 105 एलिमेंट्स का यूज करके अगर मैं अपने मॉडल को ट्रेन करूं एंड आफ्टर दैट ये डेटा के हिसाब से मैं उसको टेस्ट करूं, आई वांट टू जस्ट चेक हाउ इट इज एक्यूरेट. ओके, सो राइट नाउ मुझे एक्चुअली मेजरमेंट चाहिए. मुझे थोड़ा चेक करना था कि मेरा ट्री, अदरवाइज मेरा जो मॉडल है वो कितना एक्यूरेट है. मुझे उसका कुछ ना कुछ एक्चुअली मेजरमेंट चाहिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट चाहिए. सो गाइस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट आप बहुत सारे तरीके से ले सकते हो. लाइक टाइम लाइक कैलकुलेट कर सकते हो कि ट्रेनिंग में कितना टाइम लगा. ओके, ट्रेनिंग में कितना टाइम लगा, टेस्टिंग में कितना टाइम लगा. लेट ऐसे डिसीजन ट्री के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है. द फर्स्ट वन आई कैन जस्ट यूज जीनी इंडेक्स, अनदर वन आई कैन यूज एंट्रोपी. तो सेम रिकॉर्ड्स पे मेरे पास जो 150 रिकॉर्ड्स थे, सेम रिकॉर्ड्स के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं जीनी इंडेक्स यूज कर रहा हूँ. ओके, डिसीजन ट्री डेवलप करने के लिए मैं जीनी इंडेक्स यूज कर रहा हूँ. अदरवाइज सेम रिकॉर्ड्स को ट्रेन, मतलब सेम रिकॉर्ड्स का यूज करके एंट्रोपी एल्गोरिथम्स, एंट्रोपी कंसेप्ट यूज करके हम डिसीजन ट्री इन शॉर्ट मॉडल क्रिएट कर रहे हैं. सो वी हैव टू ऑप्शंस. सो हो सकता है कि वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हो. सो गाइज, अब मुझे वो हर एक ऑप्शन को कंपेयर करना है कि विच वन इज द बेस्ट फॉर माई डेटा सेट, विच वन इज द बेस्ट फॉर माई डेटा सेट. सो व्हाट वी हैव टू डू, एक्चुअली हम लोग उसको टाइम के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं. लाइक ट्रेनिंग टाइम एंड टेस्टिंग टाइम के हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं. और गाइज, यू कैन जस्ट कंपेयर इट विद द स्पेस और मेमोरी कंजप्शन. And finally is nothing but accuracy. So generally in machine learning, like developers or data scientists, generally accuracy के point of view सभी actually algorithms को compare करते हैं. Now consider you have three algorithms, okay, और तीनों algorithms से आपको decision tree मिलने वाला है. Consider that. And you have actually 200 records. So ये data set का मैं algorithm, ये data set and algorithm 1 का use करके एक decision tree develop कर सकता हूँ. Data set algorithm 2 and a tree will be the output. Data set and algorithm 3 and tree will be the output. Now I want to compare कि which one is the better. Okay, ये data set के ऊपर कौन सा suitable है, which one is the best actually. So generally हम लोग accuracy use करते हैं. Okay, उनको performance को measure करने के लिए generally accuracy use कर सकते हैं. आप बाकी चीजें भी use कर सकते हो, that's up to you. But मुझे actually accuracy पे focus करना है और generally ML पे accuracy पे ज्यादा focus होता है. Now, so here we have some accuracy measurement algorithms. कुछ कुछ हम लोग यहाँ पे एक्चुअली डिस्कशन करने वाले कुछ फॉर्मूलाज जिससे हम लोग एक्यूरेसी कैलकुलेट कर पाए. सो मेरे पास मॉडल डेवलप्ड हो चुका है. ओके, मॉडल डेवलप्ड हो चुका है. मैं इसके ऊपर टेस्टिंग डेटा अप्लाई कर चुका हूँ, मुझे रिजल्ट मिल चुका है. ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ. मैंने लाइक टेस्टिंग डेटा अप्लाई किया, मुझे रिजल्ट मिल चुका. नाउ वी वांट टू डू समथिंग. ओके, अब मुझे आउटकम चाहिए. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज, हम लोगों ने मैन्युअली कुछ किया था. लाइक कंसिडर वी हैव we have actually 150 records in a previous example. सो टेस्टिंग डेटा एक्चुअली मेरे पास 45 रिकॉर्ड्स है. ये टेस्टिंग डेटा के पास गाइस क्लास लेबल अवेलेबल है. ओके, क्लास लेबल उसके पास था. इन शॉर्ट व्हाट, क्लास लेबल इन द सेंस, अदरवाइज यू कैन से दैट क्लास कॉलम और लेबल कॉलम उसके पास अवेलेबल था. सो टेस्टिंग डेटा जब मैं अपने मॉडल को दूंगा देन वो कुछ मुझे प्रिडिक्शन देगा. ओके, वो मुझे कुछ प्रिडिक्शन डेटा देगा. सो मैं अगर प्रिडिक्शन और क्लास कॉलम को कंपेयर करूं, तो मुझे चेक करना हाउ मेनी दिस वैल्यूज आर एक्चुअली लाइक सेम एंड हाउ मेनी आर डिफरेंट. तो मुझे चेक करना है कि कितने सेम है कितने डिफरेंट है. तो उससे मैं एक्यूरेसी मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकता हूँ. ओके, कि लाइक ओके नाउ से कि 45 में से एक्चुअली 40 एलिमेंट्स आर सेम एंड 5 एलिमेंट्स आर नॉट सेम. सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकता हूँ. ओके, अदरवाइज लेट आई से कि 100 एलिमेंट्स थे, सॉरी 105 एलिमेंट्स थे, तो 100 आर एक्चुअली सिमिलर एंड 5 आर नॉट सिमिलर. okay, otherwise you can say that okay now we have like मैं accurate digit पे आ रहा हूँ. ओके, एक परफेक्ट डिजिट पे आ रहा हूँ. टोटल आई हैव 100 एलिमेंट्स, उसमें से 95 सिमिलर मिले, 5 सिमिलर नहीं मिले. दैट मींस व्हाट, 95% एक्यूरेसी इज देयर. ओके, तो मुझे ज्यादा फ्रैक्शनल पे फोकस नहीं करना था, इसलिए मैंने 100 एलिमेंट का एग्जांपल लिया. सो 95% माय ट्री इज एक्चुअली एक्यूरेट. मुझे ऐसा कुछ मतलब आउटपुट मिला. सो फाइनली लाइक हमारे पास कुछ टेक्निक्स है ओके एक्यूरेसी मेजर करने के लिए, बिकॉज हर एक टाइम मैन्युअली लाइक इट्स अ रिडंडेंट टास्क. तो हम लोग कुछ एक फॉर्मूला फाइंड आउट करके रखते हैं और हर एक लाइक उस फॉर्मूला को हम हर एक टाइम यूज करेंगे. So the first one is nothing but in classification accuracy. Now, what is classification accuracy? So classification accuracy का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, number of correct prediction and divided by total number of prediction made. Okay, total number of prediction made, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था. That's a similar, like it's a simplest option. Okay, total मेरे पास कितने एलिमेंट्स थे,
total how many things are there? Totally I have actually 100 elements. Okay, तो total 100 prediction हुए हैं, उसमें से actually perfect prediction कितने थे, matched prediction कितने थे? So 95. So 95 divided by 100, so 95% accurate. 95 divided by 100, so 95% accurate. Just focus on that. Number of correct prediction divided by total number of predictions made. So that is nothing but in classification accuracy. That is nothing but a classification accuracy. Just let me just go in a flow. Classification accuracy is what we usually mean. Okay, when we use the term accuracy, so it's a mean value. Mean value in the sense average, you can just say. It is the ratio of number of correct prediction divided by total number of predictions. Now it works well only if there are equal number of samples belonging to each classes. That means what? Equal number of prediction like belonging to the same classes. Ek example lete, so you will get better idea about this. Now consider there are 98% samples of A and 2% samples of B. Okay, 2% of samples of B. Then you can simply say that 98% is actually accuracy. So in short consider मेरे यहाँ पे मतलब जो class column था उस class column में मेरे पास दो output थे, yes and no. Yes and no. So 95% say yes and 2% say no. Then I can say, oh, like that is accuracy level is actually 95%. Accuracy level is actually 95%. But consider this example. Now, when the same model is tested on a set of 60% of sample of A and 40% of sample of B, then accuracy level will be different. Okay, accuracy level will be different. So ये कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अब आप सेम मॉडल को टेस्टिंग कर रहे हैं जहां पे क्लास कॉलम का डेटा एक्यूरेट नहीं है, क्लास कॉलम में एक्चुअली मिक्सर डेटा है, then you can't say anything, आपको आउटकम डिफरेंट आ सकता है. So this thing is not accurate. ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है. हम लोगों ने लास्ट टाइम जो एक्यूरेसी मेजरमेंट किया तो उसका यूज करके किया था, बिकॉज मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि कितने मैच हो रहे हैं. ओके, तो सिर्फ आप यस और नो में आंसर चाहते हो कि कितने मैच हो रहे हैं, देन जस्ट गो विथ क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी. बट आपको चेक करना है कि ओके इतने यस इतने नो, मतलब एक से ज्यादा क्लासेस अगर आपके पास अवेलेबल है देन इट मेक्स एन प्रॉब्लम. ओके, सो फाइनली लाइक एंड वन मोर प्रॉब्लम इज जब आपके पास वेटेड वैल्यू है. वेटेड वैल्यू इन द सेंस से कि मेरे पास कोई पेशेंट का डेटा था और लाइक आई हैव 1000 पेशेंट्स ऑफ डेटा एंड मुझे चेक करना था कि उसको पर्टिकुलर डिसीज है कि नहीं. Okay, so like almost say no, 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 like, and that is my classification, yes and no. But now मुझे actually कोई एक prediction करने के लिए वहां पे disease है कि नहीं, तो उसके लिए मुझे काफी कुछ work करना पड़ा. Then still classification accuracy will generate some problem. एक बार read करते हैं इसको. The real problem arises when the cost of misclassification of the minor class samples are very high. मतलब मान लीजिए 0.1% और 1% guys are having actually disease. Okay, उसको कुछ ना कुछ problems थे, बट उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक्चुअली बहुत सारा टाइम कंज्यूम करना पड़ा. एक्चुअली मुझे उसके लिए माइनर क्लास सैंपल्स आर वेरी हाई. ओके, मुझे उसको एक्चुअली क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारा टाइम कंज्यूम करना पड़ा. एट दैट लेवल आल्सो क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी जनरेट द इशू. नॉट इशू एक्चुअली लाइक जहां पे एक्चुअली हम कोस्ट फेलिंग डायग्नोसिस करते हैं. ओके, जहां पे हम लोग एक्चुअली वेटेड कंसेप्ट यूज करते हैं. मैं यहाँ पे सिंपल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यस और नो ही करना है, बट कंसिडर कि वहां पे हम लोग वेट को भी कैलकुलेट करते हैं. वेट को भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना आपका वेट यूज हुआ है. वेट इन द सेंस कितना कॉस्ट यूज हुआ है, वो पर्टिकुलर एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए कितना कॉस्ट यूज हुआ है. सो कंसीडर आपका आउटकम लाइक 0.10% में आ रहा है, अदरवाइज 0.1%, अदरवाइज 1% में आ रहा है, बट कॉस्ट इज वेरी हाई. कॉस्ट इज वेरी हाई. देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मान लो हम लोग आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, लाइक हम लोग एक्यूरेसी मेजर कर रहे हैं. then this guy says okay that is accurate, but actually that was not accurate. Okay, so यहाँ पे जहाँ पे आपने cost भी include किया, at that time also classification accuracy is not like accurate. But still the thing is classification accuracy is quite easy. You have to simply do one thing, number of correct prediction divided by total number of prediction made. Okay, generally ये use नहीं होता. Is it okay? Now another one is nothing but in logarithmic like loss, LL, that is actually known as. So यहाँ पे मुझे क्या काम काज करना है? Consider we have actually more than one classes available in class column or label column. Okay, मेरे पास एक से ज्यादा classes available है. Let I say 1 minute. Let I say like हमारे पास actually there are n samples belonging to m classes. Okay, तो मेरे पास m classes है. M classes in the sense let I say like married, single and divorced. So 3 classes are there. Otherwise fraud, then yes and no, cheat, then yes and no. So I have 2 classes data. Otherwise हम लोगों ने lastly अभी देखा था Setosa, Virginica and Versicolor. So we have 3 classes are there in output column. Okay, and n samples belong to the m classes. So हर एक के अंदर different n samples है.
तो मान लीजिए पहले क्लासेस के अंदर 10 सैंपल्स थे, दूसरे क्लासेस के अंदर 15 सैंपल्स है, थर्ड क्लास के अंदर 20 सैंपल्स है. सो गाइस देन यू हैव टू अप्लाई दिस टाइप ऑफ एल्गोरिदम और आपको यहाँ से एक्चुअली एलएल वैल्यू मिलेगी. सो व्हाट आई हैव टू डू, हर एक सैंपल के लिए मुझे वो क्लास चेक करना है, हर एक वैल्यू के लिए मुझे वो क्लास चेक करना है. इन शॉर्ट आई इक्वल्स टू 1 टू n, so this is nothing but examples. उसमें मैं j equals to 1 to m अप्लाई करूंगा. What is j equals to 1 to m? That is actually number of classes. And here you have to just check why ij, in short I and j दोनों का intersection है कि नहीं, मतलब that value is belongs to that particular class or not. And what is the probability log of that probability log? What is the probability of that particular like yij? In short eij in the sense like probability check करना है कि कितनी probability है. Like consider मेरे पास 10 records है, 10 records में से 6 बोल रहे हैं कि married, third like 3 ऐसा बोल रहे हैं कि like divorced and 1 is actually single. So total 10 records are there, उसमें से 6 married, so 6 by 10 it's a probability, you know guys that. Okay, so what about yj? Yj indicates a sample I belongs to the class j or not. And pij, that's nothing but in probability to sample I belong to that class j. Now what about that log loss? So log loss in the sense it's a logarithmic algorithm. Okay, so हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 1/n से इन नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करेंगे and you will get the answer actually. Now finally log loss has no upper bound, in short answer may be infinite, but logarithm find out करने का मतलब क्या होता है कि आंसर जितना हो सके उतना हम लोगों ने यहाँ पे log लिखने का मतलब जितना हो सके उतना आंसर स्मॉल में कन्वर्ट करने की ट्राई की है. बट हो सकता है इसका आंसर कुछ भी है, मिनिमम विल बी 0, max will be infinite actually. ओके और जितना मिनिमाइज्ड वैल्यू आपको मिल रहा है दैट मींस इतना इतना एक्चुअली आपके पास एक्यूरेसी ग्रेटर है. जितनी मिनिमम वैल्यू मिल रही है दैट इज हायर एक्यूरेसी. So that is the second algorithm. You can just apply this also. Now second and third one is actually confusion matrix. This is quite important और generally हम लोग confusion matrix use करते हैं. या तो confusion matrix अदरवाइज कौ मेथोडोलॉजी है. जनरली हम लोग ML के लिए वो एल्गोरिथम मतलब ये एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हैं. What is confusion matrix? So name says it is confusion matrix. Okay, so it's a matrix. Consider it is matrix. Now I have actually two outcomes, two possible outcomes I have, that is yes and no. Consider I have yes and no. Okay, so this is my actual data, this is my actual data. So actual data में मान लो मेरे पास output no था. Actual data in the sense actually जब हमारे पास data set था उसको हमने divide किया training and testing में. So ये testing का result है. Okay, तो testing में मेरे पास total 165 records थे. Consider and 165 records में से मेरे पास नो रिकॉर्ड्स कितने थे, तो नो वाले एक्चुअली मेरे पास थे 60, नो वाले थे मेरे पास 60. ओके एंड व्हाट अबाउट यस, तो यस वाले थे मेरे पास 105. ओके यस वाले मेरे पास थे 105. मैं अपने टेस्टिंग डेटा की बात कर रहा हूँ. सो टेस्टिंग डेटा में मेरे पास टोटल 105 रिकॉर्ड्स थे. 105 में से एक्चुअली 60 डेटा ऐसे थे कि जो ना बोल रहे एंड यस वाले एक्चुअली 105 थे. सो आई हैव टू क्लास कॉलम्स एक्चुअली यस एंड नो. मेरे पास दो क्लास कॉलम थे. Sorry, class column में actually दो कैटेगरी थी. 60 says yes, sorry 60 says no and 105 says yes. Now finally जब मैंने अपना अल्गोरिथम अप्लाई किया, मॉडल को ये टेस्टिंग डेटा प्रोवाइड किया, देन उसने कुछ प्रेडिक्शन किया. तो प्रेडिक्शन में मुझे कोई डेटा यस मिले, कोई डेटा नो मिले. ना मुझे उनको कंपेयर करना था. सो गाइस हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से 50 says no, बट वो 50 में एक्चुअली जो नो था वो मैच हुआ. मतलब एक्चुअली हमारे पास टोटल नो हमारे पास आए थे 55. टोटल नो हमारे पास आए थे 55 एज पर द प्रेडिक्शन. बट उसमें से 50 मैच हुए, एक्चुअल जो टेस्टिंग डेटा था उसके साथ मैच हुए. जस्ट चेक दिस वन. ओके लाइक 00 मैट्रिक्स के अंदर जो 00 नंबर का कॉलम है, इन शॉर्ट फर्स्ट सेल. एंड 5 हम लोगों ने लाइक मिस क्लासिफाई किया था, 5 एलिमेंट को मिस क्लासिफाई किया था. इन अ सिमिलर वे मेरे पास एक्चुअली 110 यस थे एज पर द प्रेडिक्शन डेटा. ओके मॉडल को ट्रेन करने के बाद जब हमने टेस्टिंग डेटा अप्लाई किया, देन हम लोग को जो आउटपुट मिला उसमें से 110 सेज यस, 110 सेज यस, बट उसमें से एक्चुअली यस को मैच हो रहे थे. सॉरी यस एंड नो. इन शॉर्ट दिस इज द मिसक्लासिफाइड. 10 numbers of data are misclassified and 100 number of elements are perfectly classified. So this is the confusion matrix. तो ये हम लोग को एक्यूरेट आंसर देता है. ओके यहाँ से हम लोग को एकदम परफेक्ट आंसर मिलता है. अब इसको चेक कैसे करना है, हाउ read this. This is actually divided into four parts: TP, TN, FP and FN. TP in the sense true positive. TP in the sense true positives मतलब अपना टेस्टिंग डेटा बोल रहा था नो, टेस्टिंग डेटा इन शॉर्ट एक्चुअल डेटा बोल रहा था नो, और आपने भी प्रेडिक्शन किया है नो, आपने भी प्रेडिक्शन किया है नो. ओके एंड इन सिमिलर वे आपका एक्चुअल डेटा बोल रहा था यस एंड आपने भी प्रेडिक्शन किया है यस, आपने भी प्रेडिक्शन किया है यस.
So this yes just check, तो उसके हिसाब से नाम है. Okay, the true positive in the sense the case in which we predict yes and actual data also says yes. Okay, actual data also says yes. So what is that? This is sorry, what is this? This is actually TP. ये वाला डेटा कौन सा हो गया? ये TP हो गया. What about this one? What about this one? This is true negative. मतलब actual data says no, हमने भी prediction किया no. तो this is TN. So हमारे पास दो चीजें developed हो गई. So here we have actually like actual data prediction. So हमारे पास था यहाँ पे no. Okay, काफी सारी जगहों पे आपको पहले yes मिलेगा. That's up to you. आप कैसे लिख रहे हो वो आपके ऊपर है. यहाँ मेरे पास था no and here I have yes. So what about this? This is known as true negative, in short TN, and this is known as true positive. That means TP. मतलब हमने भी predict किया था yes and actual data भी बोल रहा था yes. So that is TP and actual data says no and हम लोगों ने predict किया no. That is actually TN. So that is actually known as TN in the sense true negative. The cases in which we predict no and actual output was also no. Now what about the false positive and false negative? False positive matlab output says no, actual data says no, but we says oh yes. Okay, so we predict yes, but actual data says no. So यहाँ पे ये भाई साहब no बोल रहे थे, but हमने yes predict किया. So what about that? That is actually known as false. Yes in the sense positive. Okay, तो पीछे मतलब yes in the sense positive. So what you have to do, अगर ये याद नहीं रहता तो हम लोग को कॉलम पहले रो वाइज जाना है. So यहाँ रो क्या बोल रहा है? यहाँ रो बोल रहा है yes, but हम लोग क्या बोल रहे हैं? No. हम लोग क्या बोल रहे हैं? No. So it mismatched. So false and no in the sense negative. So FN. So this is actually confusion matrix. That is actually the confusion matrix. Okay, तो confusion matrix कुछ इस तरीके से लिखा जाता है. Now finally, confusion matrix का use कैसे करें? So now if you want to just measure the calculation, अगर आप कैलकुलेशन ओके मैं यहाँ पे इसका यूज कर लेता हूँ. अगर आप कैलकुलेशन मेजर करना चाहते हो देन गाइस कहाँ मैच हुआ है प्लीज चेक कौन कौन सी चीज मैच हुई है. तो नो मैच हुआ एंड yes मैच हुआ है. सो टीपी एंड टीएन दिस आर द मैच्ड एलिमेंट. ओके, टीपी एंड टीएन जो प्रेडिक्शन और एक्चुअल आउटकम में मैच्ड हुआ है तो उन दोनों का यूज करें एंड डिवाइड बाय टोटल सैंपल्स. सो यू विल गेट एक्चुअली एक्यूरेट आउटपुट. Okay, that is the accuracy actually. So how many total elements are there in our example? So total are 165, 50 are actually like true negative and 100 are actually true positive. So 100 plus 50 that is 150. 150 divided by 165 the accuracy is actually 0.91. So generally confusion matrix हम लोग use करते हैं, but confusion matrix में इस तरीके से outcome आता है. I hope guys this is clear to everyone. Okay, so let me just read this. Confusion matrix, as the name suggests, gives the matrix as output and describe the complete performance of your model. Now let's assume we have a binary classification problem and outcome is actually yes and no. Okay, so we just go through this one. हम लोगों ने एक कंप्लीट किया, एक बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम हमने लिया ना. हो सकता है कि बाइनरी की जगह में टर्नरी हो, टर्नरी की जगह मान लो अपने पास आउटकम में 4 वैल्यू क्लासिफिकेशन में हो, 10 वैल्यू क्लासिफिकेशन में हो. सो सेम मैट्रिक्स विल बी डन. ओके, तो आपको सिर्फ डायगोनल का समेशन करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. You will get actually accuracy. So that's that. Now this is also an important one, guys. Any doubt? Maulik sir, Vijay sir, confusion matrix I hope guys clear हुआ है. Prithvish bhai, is it done? हाँ sir. Fine. Okay, so now another one is area under the curve. Generally इसको हम बोलते हैं AUC. So what is area under the curve? So what we will do here, we will simply draw a graph. And this is actually a 50% graph जो actually यहाँ पे एक vertical line, it's not a vertical actually, जो diagonal line draw की है, blue dash line cover किया हम लोगों ने. अब उसके ऊपर देखिए हमारे एक orange line draw हुआ है. Okay, so जितना maximum area ये cover करेगा, जितना maximum area हमारा जो ये orange line cover करेगा, that is the accuracy level. तो जितना maximum आप cover करोगे, consider मुझे एक्चुअली एक्यूरेसी मेजर करना था, अदरवाइज मुझे एक्यूरेसी कंपेयर करना था with some another decision tree model, otherwise with some another actually decision tree algorithm. So मेरे पास दो एल्गोरिथम है, सेम डेटा सेट के ऊपर मैं दोनों एल्गोरिथम अप्लाई करूंगा, देन आई विल गेट टू डिफरेंट ग्राफ. मुझे दो ग्राफ मिलेंगे, जिसका ज्यादा आउटकम आ रहा है, जो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, आई विल से दिस इज मोर एक्यूरेट कंपेयर टू अदर वन. ओके, दिस इज मोर एक्यूरेट कंपेयर टू अदर वन. सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल जस्ट लाइक फेच सम पॉइंट्स. कुछ पॉइंट्स हम फिक्स करेंगे कि टोटल मान लो आपके पास टोटल लाइक 100 एलिमेंट्स है
Then after each and every 20 elements we will just measure the accuracy कैसे measure करना है वो देखते हैं, but we will just measure the accuracy और उस measure accuracy को हम लोग put करते हैं. Okay, graph draw करेंगे and जितना maximum area cover हो रहा है that means say up to this point this is the accuracy. मतलब इन दोनों में up to this point ये दोनों में कौन आगे था, in short कौन accurate था, and after that final जब conclusion मिलेगा पूरा graph draw हो जाएगा. After that you can say okay this graph otherwise this model is more accurate compared to the second model. So now let me just go through. So what is area under the curve? So area under the curve, it is most widely used matrix for evaluation. Okay, now it is also for the binary classification problem. Now what we have to do, AUC of classifier is equal to the probability that the classifier will rank. Okay, will rank in the sense like will rank in the sense कितना area cover कर रहा है. And एक और चीज यहाँ पे लिखी है randomly chosen the positive examples higher than the randomly chosen negative examples. So अगर आपके पास दो चीजें कंपेयर करने के लिए नहीं है, then guys like from this confusion matrix we will have two things like positive outcome and negative outcome. Just put both this thing. अगर नेगेटिव आउटकम में आपको ज्यादा वैल्यू आ रही है दैट मींस व्हाट, ये अपना एक्यूरेट नहीं है. पॉजिटिव आउटकम में ज्यादा वैल्यू आ रही है दैट मींस व्हाट, इट इज मोर एक्यूरेट कंपेयर टू नेगेटिव. अगर दोनों में सिमिलर आ रही है देन सिंपली यू कैन से ओ 50-50 आउटकम इज देयर. Okay, 50% is the accuracy. So now how to calculate the true positive rate? How to calculate this true positive rate? तो सबसे पहले आपको true positive divide by false negative and true positive रखना है. So TP divide by FN and TP. So TP divide by FN and TP. FN and TP. So आपने बोला था yes, मतलब जो आउटकम अपना एक्चुअली डेटा था, अपना जो एक्चुअल डेटा था इससे इज yes, and आपको जो आउटकम मिला ट्रेनिंग डेटा से FN and TP. ओके, सो ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय जो आउटकम था वो. ओके, सो अब यहाँ पे आपको एक पार्शियली रेट पुट करना है like 20% डेटा, 40% डेटा, 60% डेटा, 80% डेटा एंड ट्रू पॉजिटिव रेट कैलकुलेट करते रहिए. ओके, एंड हियर जस्ट ऑब्जर्व वन थिंग, on a y-axis we have actually true positive rate. Okay, y-axis we have true positive rate, and here we have actually false positive rate. So but the thing is sir ये कब मुझे कैलकुलेट करना है? अगर पूरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स में कंप्लीट कर दूं तो पूरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स मुझे कब मिलेगा? जब हम लोग एक्चुअली पूरा टेस्टिंग डेटा अप्लाई कर देंगे. सो ओनली सिंगल वैल्यू वी कैन गेट. बट मुझे क्या करना था, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है. इन शॉर्ट मुझे डिफरेंट वैल्यूज चाहिए. सो आफ्टर सम इंटरवल आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो कैलकुलेशन करने के बाद आप दो चीजें रखिए, फॉल्स पॉजिटिव रेट एंड ट्रू पॉजिटिव रेट, दोनों कैलकुलेट करके पॉइंट रखते जाइए, एक एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट. अगर आपका एरिया ज्यादा कवर अप हो रहा है देन यू कैन से दैट ओके इट इज मोर एक्यूरेट. Okay, so that's that. This is the concept actually. So how to calculate the false positive rate? How to calculate the false positive rate? False positive divided by true negative and false positive. So TN and FP are the same. TN and FP मतलब ये वाली चीज आपको देखनी है डिवाइड में, और ऊपर क्या आएगा ट्रू नेगेटिव, सॉरी false positive in the sense this one. Okay, false positive in the sense like FP. So that's that. This is the actually value. आपको इस तरीके से दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पॉइंट्स पुट करें and you will get actually output. अगर बी केयरफुल, आपको जो भी रेंज मिलेगा AUC का वो 0 से 1 के अंडर में ही मिलने वाला है. फाइन. सो यहाँ पे हम लोग को जैसे जैसे वैल्यू ज्यादा मिलेगी, अदरवाइज जितना एरिया ग्राफ के अंदर में ज्यादा मिलेगा, यू कैन सिंपली से दैट द एक्यूरेसी लेवल इज दिस. Now after that the F1 score is there. So F1 score में actually हम लोग once again accuracy matrix ही use करेंगे, but we will find two more things. दो और चीजें हम लोग को calculate करनी है, that is actually precision and recall. So what is that precision and recall? So precision is actually like, okay, now we will just use this formula, 1 upon precision and 1 upon recall. Now what is precision? Once again we will use accuracy matrix internally. So precision is actually TP upon TP plus FP. True positive upon actually true positive and false positive. And what about okay, now यहाँ पे भी actually recall में भी वही formula copy paste हो चुका है guys. But what about recall? It is the number of correct positive results divided by number of all relevant samples. Okay, just check this, divide by okay correct positive results, and correct positive results in the sense yeah formula सही है guys. Okay, so correct positive results मतलब true positives divide by true positives and false negative. एक बार यहाँ पे चलते हैं, true positive divide by true positive and false negative, true positive and false negative. तो इससे डिवाइड करना है मुझे, इससे टोटल को डिवाइड करना है. What about precision? Sorry, what about actually where is the recall?
Okay, what about the precision? True positive divided by true positive and false positive divided by true positive and false positive. ओके तो यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड करना है कॉलम से, और एक तरफ हम लोग को रो से डिवाइड करना है. फॉर्मूला हम लोग को देखना नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो द मैथोडोलॉजी. ओके, इस तरीके से भी वर्क हो रहा है. So now recall and actually अगर आप precision की value find out करते हैं, then just find the reciprocal or inverse of that and multiply it by 2 into 1 upon the final answer. तो जितना F1 स्कोर आपका बढ़ा उस हिसाब से आप बोल सकते हो ओके फाइनली दिस इज एक्चुअली लाइक एक्यूरेसी. जितना F1 स्कोर ग्रेटर उतना आपका एक्यूरेसी ज्यादा है. So the greater F1 score, the greater the F1 score, the better is the performance of our mirror. So this is also depends on accuracy matrix. इससे पहले जो हमने देखा AUC, it is also depends on accuracy matrix. So guys finally accuracy matrix is most usable. Okay, accuracy matrix सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है. Now another thing is mean absolute error. So what is mean absolute error? तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब मैं सिंपल सा काम काज करूंगा yj माइनस माइनस कैरेट ऑफ yj इन द सेंस yj it's my actual data and what about y caret of yj it's my actually predicted data. तो उन दोनों का सब्सट्रैक्शन हर एक वैल्यू के लिए, जितना भी आपको डिफरेंस मिला उन दोनों का सब्सट्रैक्शन हर एक वैल्यू के लिए और उसको डिवाइड करें 1/n से, तो जो भी आपको आंसर मिल रहा है दैट्स नथिंग बट अ मीन एब्सोल्यूट एरर. सो दिस इज ऑल्सो द मेजरमेंट. इससे भी हम लोग को एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ी ज्यादा वैल्यू आ सकती है. अगर आपके पास कुछ आउटलायर्स वगैरह मिला तो आपको कुछ डिफरेंस ज्यादा मिल सकता है. लाइक कंसीडर मैं रिग्रेशन एल्गोरिथम पे काम कर रहा था, इन शॉर्ट न्यूमेरिकल डेटा इन आउटपुट कॉलम. So if someone say, okay, now my output am actually 50, but prediction is 50, like actual output is 50 and prediction is 20. So the difference between 50 minus 20, it is 30. Okay, तो उनका आप summation करें and उसको 1/n से divide करें, you will get a bigger value. So that's making problem. So what we can do, mean absolute error को आप in future actually like MSE mean squared error के अंदर cover कर सकते हो. Title change नहीं हुआ है. Okay, that is actually mean squared error. मीन स्क्वायर्ड एरर इन द सेंस यहाँ पे सिर्फ हमने स्क्वायर कर दिया है, नथिंग एल्स. ओके, सो इन शॉर्ट व्हाट विल हैपन एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को एब्सोल्यूट आउटपुट मिल सकता है, इन शॉर्ट थोड़ा परफेक्ट आउटपुट मिल सकता है. So that's that. So these are actually measurement techniques. These are actually measurement techniques. Most usable is actually accuracy.